Hello, dear students, it's me Shakil Khan. Students, in today's video, you're going to learn about the use of has to and have to. If a task means must do, then have to or has to is used according to the subject. But if the task is in present tense, then we use has to or have to. Let's have a look what is the formula of has to and have to and how to make sentences by using this formula. स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप सीखेंगे हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। हैज़ टू और हैव टू को हम ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि जो काम ज़रूरी करना हो, कोई भी काम जो कि आपको ज़रूरी करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ टू और हैव टू को प्रेजेंट टेंस के लिए। और आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इसके जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। द फॉर्मूला फॉर हैज़ टू एंड हैव टू इज़ subject plus has to slash have to plus verb first form plus object, and the identification in Urdu is if there is पढ़ता है और ना है। किसी भी जुमले के आखिर में अगर पढ़ता है या ना है आए तो हम इंग्लिश में हैज़ टू और हैव टू को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। आइए देखते हैं कि हैज़ टू और हैव टू को फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए जुमले किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई don't have to go to school. Do I have to go to school? He has to learn English. उसे अंग्रेज़ी सीखनी है। He does not have to learn English. Does he have to learn English? Students, one thing which is very important to remember that how to make sentences as negative and interrogative. As I wrote the first sentence, I have to go to school. Then when I changed it as negative, I just put don't after the subject, then have to go to school. I don't have to go to school. But when we change as interrogative, we put do I have to go to school. Means if there is have to, you put don't after the subject. If you change it as interrogative, you put do before the subject. And if the subject is a third person singular and the helping verb is has to, we put does not after the subject, as I did in this first sentence that he has to learn English. He does not have to learn English. When I put does not, I changed has into have. And when I changed it as interrogative, I also put does before the subject and I changed has into have. So this is the way to make sentences as negative and interrogative. Don't forget it. Remember it always. We have to perform our duty. हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। We don't have to perform our duty. Do we have to perform our duty? They have to stand by their companions. उन्हें अपने साथियों का साथ देना है। मुझे बहुत मेहनत करनी है। I have to work hard. You have to wait for me. आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ता है। He has to get up early in the morning.
उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। We don't have to waste our time. हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। He does not have to support me. उसने मेरी मदद नहीं करनी। Do Pakistanis have to celebrate Independence Day every year on 14th August? क्या पाकिस्तानियों को हर साल 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाना पड़ता है? Do you have to finish work in time? क्या तुम्हें वक्त पर काम ख़त्म करना पड़ता है? Does the gardener have to water the plants every day? क्या माली को हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है? Does Arshad have to take test in English? क्या असद को अंग्रेज़ी का इम्तिहान देना है? Does she have to decorate her room? क्या उसे अपना कमरा सजाना है? Essence, it was all about the use of has to and have to in the present tense. I hope you enjoyed it and found it useful. So keep on learning English with Indus English. Let's see in the next video. Till then, God bless you. Bye bye.